Hello students, welcome again in the next lecture of the lecture series. So today our topic will be about the plant kingdom, and this topic is included in the syllabus of class 9th and under the chapter that is known as the diversity in living organisms. As the R.H. Whittaker, he classified all the living organisms of the world into the five kingdoms, all the living organisms of the world into five kingdoms, and the five kingdoms included the kingdom Monera, that includes the prokaryotic living organisms. The second kingdom, that is known as the kingdom Protista, that includes the unicellular eukaryotic organisms. Third kingdom, that is known as kingdom Fungi, and that fungi included the multinucleate fungi or multicellular fungi. After that, the fourth kingdom, that is known as the plant kingdom, or this is also known as the kingdom Plantae. And this plant kingdom includes the organisms which are known as plants. And what are the various features of the plants जो होते हैं उनमें क्या features होते हैं, या इस kingdom में, इस group में किन organisms को रखा गया, वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं. And the first feature of the organisms which are kept in this plant kingdom, that is firstly they are the autotrophic organisms. And autotrophic means they prepare their own food with the help of the with the help of the photosynthesis. And they are autotrophic because they contain the structures in their, yeah, usually they contain the chlorophyll, and they contain the structures which are known as plastids in their cells. This is the first feature of the organisms which are kept in the kingdom Plantae. Autotrophic, having the plastids in their cells. And second feature is that they are multicellular eukaryotic organisms. The kingdom Plantae, they are multicellular. Maximum of them they are multicellular except the algae. इनमें जो प्लांट किंगडम में जो भी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, जो भी प्लांट्स होते हैं, यूजुअली दे आर द मल्टीसेल्युलर एक्सेप्ट a few ones. Algae इनमें आते हैं. Those are unicellular, but they are also kept in the plant kingdom. Next feature is that they contain the cells. That the cells of these plants, of these organisms, they contain the cell walls in their cells. They contain the cell walls in their cells. This is another feature. And usually the cell walls, they are made up of a cellulose structure, that is the material that is known as the cellulose, that is a polysaccharide. Another feature of the organisms belonging to the kingdom Plantae. Next feature of the organism belonging to the kingdom Plantae is that they are non-motile. Non-motile means they cannot move. ये जो प्लांट्स होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकते हैं. दैट वी कॉल एज नॉन मोटाइल, मीन या नॉन मोबाइल भी हम इनको कह सकते हैं. एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज दैट दे हैव, या देयर लाइफ साइकिल दैट अल्टरनेट्स, या लाइफ साइकिल, उनके जो लाइफ साइकिल जो होता है उनमें लाइफ साइकिल alternates between the gametophytic phase, that is haploid gametophytic phase, and the diploid sporophytic phase. This is another feature of the organisms belonging to the kingdom Plantae. ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें इनका जो लाइफ साइकिल होता है, that alternates between there is present the one phase that is known as gametophytic phase, and then that is haploid in the sense the cells of these plants, of this phase, of the plant which is present in the gametophytic, that is having the half number of chromosomes,
एंड सुपोरोफिटिक फेज हम किसको कहते हैं? सुपोरोफिटिक फेज में होता है ये डिप्लॉयड इन द सेंस इट कंटेन्स द 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन देयर जेनेटिक मटेरियल इन देयर न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल हम ऐसे कह सकते हैं ये जो गैमेटोफिटिक फेज होता है, गैमेटोफिटिक फेज जो प्लांट्स में होता है दैट प्रोड्यूस द गैमेट्स मींस मेल एंड फीमेल गैमेट, या वी कैन से sperm and egg that produces gametes, and this gametophytic phase it produces the gametes by a process that is known as mitosis, that is known as the equational division. दिस इज द टाइप ऑफ डिवीजन, सेल डिवीजन। ये माइटोसिस एक सेल डिवीजन होता है जिसमें जो एक सेल जब डिवाइड करती है एंड दैट सेल डिवाइड्स इनटू द 2 cells and those 2 cells are having the exact same number of chromosomes as that of the parent, that is known as mitosis, and the gametophytic phase that produces the gametes by the help of the mitosis, and this gametophytic phase is having the haploid number of chromosomes या half number of या n number of chromosomes. After that the next phase the होता है that is known as sporophytic phase, and this sporophytic phase this produces the spores, that produces the spores, and these spores by the process that is known as the meiosis, that is the another type of the cell division, जिसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ होता है जो पेरेंट। फॉर एग्जांपल अगर ये पेरेंट सेल है इसमें अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है तो ये जब डिवाइड करती है into 2 cells, the chromosome, the daughter cells are having the half number of chromosomes. The cell division is known as the meiosis, and the sporophytic phase that is itself diploid in the sense it contains the 2n number of chromosomes, or double number of chromosomes in the cells, and this sporophytic phase produces the spores, and those spores help in the production of the new organisms। and ये होता है the haploid and the diploid phase। या ऐसे हम कह सकते हैं गेमेटोफिटिक फेज जो होता है एक प्लांट होता है ये गेमेटोफाइट फॉर एग्जांपल हम इसको कहेंगे, ये प्रोड्यूस करता है गैमेट्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, एंड मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं ये प्रोड्यूस करता है एक न्यू ऑर्गेनिजम्स दैट इज हैविंग द 2n number of, this male gamete contains the half number of chromosomes, female gamete contains the half number of chromosomes, and after that when male gamete and the female gamete fuse they produce a zygote, and zygote is having 2n या double number of chromosomes, and ये zygote से जो plant प्रोड्यूस होता है दैट इज नाउ नोन एज सुपोरोफिटिक फेज या सुपोरोफाइट। दिस इज नोन एज सुपोरोफाइट, एंड ये जो सुपोरोफाइट है दिस सुपोरोफाइट contains now how many number of chromosomes? The double number of chromosomes. This is known as suporophyte, and after that this suporophyte this produces the spores, and those spores are the microscopic structures, that produces spores, and spores they germinate at some place and again lead to the formation of the structure that is known as gametophyte। ऐसे हम कह सकते हैं कि द लाइफ साइकिल या गैमेटोफिटिक फेज जो होता है वो जन्म देता है स्पोरोफिटिक फेज को, और स्पोरोफिटिक फेज इन टर्न दैट लीड्स टू द प्रोडक्शन या फॉर्मेशन ऑफ द another phase that is known as gametophytic phase। that is why this is known as that is why this is called as the alternation between या alternation of generation इसको हम कहेंगे। the life cycle alternates between the गैमेटोफिटिक फेज एंड स्पोरोफिटिक फेज। थोड़ा बहुत हम रिकैप करेंगे। अब तक हमने देखा कि प्लांट किंगडम में वो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं जो फर्स्टली दे आर ऑटोट्रॉप्स, and autotrophs are because they contain chlorophyll in the special structures which are known as plasters। After that they are multicellular and eukaryotic, not prokaryotes, all the plants are eukaryotic and they are multicellular except a few, they are algae are unicellular। After that the plants are having the cell walls in their cells, and that cell wall is made of a material that is known as cellulose। After that the next feature of the plants ये होते हैं non motile, they cannot move from one place to another place, and after that the life cycle includes there is a alternation of generation। One includes 2 phases, gametophytic phase which produces the next phase that is known as sporophytic phase, and sporophytic phase indirectly that produces the we can say gametophytic phase। And this much about the introduction of the organisms which are kept in the plant kingdom। After that ये जो plants है दुनिया के तमाम plants वो
अब they have been divided into the further divisions. जैसे हमको पता है कि एक जो किंगडम होता है that is made up of the several we can say divisions, या we can say in case of the plants and the phylas in case of the animals. एंड इसी तरह से जो तमाम दुनिया के प्लांट्स है they have been classified into the further, yeah, they have been divided into the subgroups या subdivisions we can see, but on the basis of number of features. Firstly, जैसे हमको पता है कि दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं सारे प्लांट्स एक जैसे नहीं हैं. कुछ प्लांट्स उनमें one type of features, they have one type of features, and some plants they have the one type of features, and that is why the scientists they divided the plants into the number of categories according to their similarities. इसी तरह से हम बोलेंगे जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स फर्दर डिवाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फीचर्स. लाइक फर्स्टली प्लांट्स कैसे डिवाइड, किन फीचर्स, कौन से फीचर्स है जिन की बुनियाद पे साइंटिस्ट्स ने जो प्लांट्स है उन प्लांट्स को डिवाइड किया, उनको तकसीम किया इनटू द नंबर ऑफ ग्रुप्स. द फर्स्ट फीचर इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड्स. प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड्स फर्स्ट फीचर जिससे प्लांट्स को डिवाइड किया गया इनटू नंबर ऑफ कैटेगरीज. द फर्स्ट इज नोन एज प्रेजेंस ऑफ. कुछ प्लांट्स उनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं उनको एक कैटेगरी में रखा गया, एंड कुछ प्लांट्स उनमें सीड्स एब्सेंट है या उनको दूसरी कैटेगरी में रखा गया. आफ्टर दैट द नेक्स्ट फीचर दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स. प्रेजेंस ऑफ वेल differentiated बॉडी पार्ट्स. एक प्लांट के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल द मेजर बॉडी पार्ट्स विच आर present in the plants are usually roots are there, stem is there, या leaves are there, या branches are there. These are the various parts of the plants. And कुछ अब जो plants होते हैं कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि देयर आर नॉट वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स. लाइक कुछ प्लांट्स में जो रूट, स्टेम और लीफ वो एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं होते हैं. दे लुक अलाइक, वी कैन से दे लुक लाइक द सेम या दे लुक द सेम. उनकी जो शक्ल है वो रिजेंबल होती है एक दूसरे से, वो क्लियरली डिफरेंशिएट. वहाँ पे पता नहीं चलता है कि एक रूट कहाँ पे है, स्टेम क्या है और लीफ क्या है. दैट इज वाई और उन प्लांट्स को एक कैटेगरी में रखा गया. एंड कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे हम विच आर विजिबल ऑन इन आवर सराउंडिंग्स, दे हैव द वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स. लाइक एप्पल ट्री इज देयर, उनमें जो रूट्स होते हैं वो क्लियरली डिमार्केटेड है, स्टेम अलग है, लीव्स ब्रांचेस अलग है, एंड उन प्लांट्स को अलग कैटेगरी में रखा गया है. दिस इज द नेक्स्ट फीचर. वी हैव टू डिवाइड ऑल द प्लांट्स इनटू द नंबर ऑफ कैटेगरीज. द नेक्स्ट फीचर ऑन विच द प्लांट्स हैव बीन बाइफरकेटेड या डिवाइडेड इनटू द कैटेगरीज, that is the presence or absence of the conducting tissue या xylem and phloem. या vascular tissue हम xylem and phloem, या इसको हम शॉर्ट में कहेंगे vascular tissue. दिस इज नेक्स्ट फीचर, vascular tissue या vascular bundle हम इसको कहेंगे. अब प्लांट्स को डिवाइड करना है. अब नेक्स्ट फीचर जिसकी बुनियाद पे हम प्लांट्स को डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उसमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता है, उनको हम एक कैटेगरी में रखेंगे. एंड कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें वेल डिफरेंशिएटेड, उनमें होता है प्रेजेंट द जाइलम एंड फ्लोएम, उनको हम नेक्स्ट कैटेगरी में रखेंगे हैं. एंड दीज आर द फ्यू फीचर्स ऑन विच वी क्लासिफाई, ऑन विच वी मेक द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच आर नोन एज प्लांट्स. पहला प्रेजेंस, कुछ में सीड्स प्रेजेंट होते हैं, they are kept in one category, कुछ में absent होते हैं, they are placed in the next category. Presence of well differentiated body parts, that means stem, root and branches we can see, and presence or absence of xylem and phloem. These are the various features on which we divide the plants into the various categories. अब हम पढ़ेंगे कि साइंटिस्ट्स ने इन प्लांट्स को किन किन कैटेगरीज या किन सब डिविजन्स या किन ग्रुप्स में डिवाइड किया है. लेट्स सी द प्लांट्स.
plant kingdom has been divided into two subdivisions. The first subdivision is known as the cryptogamy. And next subdivisions है ये, divisions नहीं है, subdivision, that is known as the phanerogamy. These are the टू सब डिविजन्स. हम अभी बोलेंगे कि क्रिप्टोगैमी किनको कहते हैं या फाइनेरोगैमी किनको कहते हैं. प्लांट्स जो होते हैं दुनिया के सभी प्लांट्स या तमाम जो प्लांट्स दुनिया में हैं उनको दो सब डिविजन्स, दो सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट सब डिवीजन इज नोन एज क्रिप्टोगैमी, नेक्स्ट सब डिवीजन इज नोन एज फाइनेरोगैमी. क्रिप्टोगैमी आर यूजुअली दे आर फ्लावरलेस या वी कैन से दे आर सीडलेस प्लांट्स. फर्स्ट फीचर, yeah, this is the seedless plants. And phanerogamy, that includes the plants having seeds, that is having the seeds. Plants having the seeds, they are known as phanerogamy या phanerogames we can say. या usually अगर हम literal meaning लेंगे cryptogamy means the marriage, we can say marriage, and crypto means hidden. Crypto means the literal meaning. If we take, this is the literal meaning of the crypto is hidden, and gamy means the, we can say, marriage. And if we take the phanero means, we can say, visible. Visible we can say, and the gamy means the marriage. Or gamy, they are named so because they do not contain flowers, and reproduction जो cryptogamy में होती है, that is not visible, that is hidden, we can say. That is why they are named as the cryptogamy. साइंटिस्ट्स को पता नहीं चलता था कि इनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तभी इन्होंने इनका नाम रखा द क्रिप्टोगैमी. एंड फाइनेरोगैमी मीन्स रिवील्ड. फाइनेरो मीन्स रिवील्ड एंड गैमी मीन्स मैरिज, रिवील्ड या विजिबल मैरिज. इनमें जो यूजुअली दे आर हैविंग द सीड्स या यूजुअली दे आर हैविंग द फ्लावर्स, नॉट ऑल ऑफ देम. एंड उनमें जो रिप्रोडक्शन, उनकी रिप्रोडक्शन दैट वाज विजिबल, दैट इज रिवील्ड, तभी उन्होंने रखा इनका नाम द फाइनेरोगैमी. आफ्टर दैट we can say the scientists, they divided the cryptogamy into further divisions. जिस तरह हमने पढ़ा कि एक किंगडम या एक सब डिवीजन होता है that is made up of number of divisions, इसी तरह cryptogamy has been divided into number of divisions, and phanerogamy has been divided into number of divisions. phanerogamy के अलग divisions है, cryptogamy के अलग divisions. and cryptogamy, the plants पहले दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए. दीज आर नॉन फ्लावरिंग या डू नॉट कंटेन द सीड्स, and these are the flowering, yeah, we can see they are the seeded plants. And after that cryptogamy, ये जो seeded वो plants जिनमें seeds नहीं present है, उनको further divide किया गया into the three, we can say, divisions. The first division is known as the thallophyta, and the second division, that is known as the bryophyta, and the next division, that is known as the pteridophyta. These are the three divisions. तीन divisions को में तकसीम किया गया किन प्लांट्स को, जिनको हमने रखा नाम the cryptogamy. The divisions are division thallophyta, we can see, division bryophyta, and division pteridophyta. And phanerogames have been divided into two divisions. The first division is known as the gymnospermia, and next division is known as the division angiospermia. ये जो तमाम प्लांट्स है, एंड तमाम प्लांट्स को अब डिवाइड किया गया इन हाउ मेनी डिविजन्स, इन 5 डिविजन्स. द फर्स्ट डिविजन इज नोन एज थैलोफाइटा, नेक्स्ट इज नोन एज ब्रायोफाइटा, नेक्स्ट इज नोन एज टेरिडोफाइटा, एंड दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द क्रिप्टोगैमी. एंड द नेक्स्ट डिविजन इज द फोर्थ डिविजन जिम्नोस्पर्मी, एंड फिफ्थ डिविजन एंजियोस्पर्मी, एंड दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, द फाइनेरोगैमी. तो वो सब हम बाद में देखेंगे. वी विल स्टार्ट द फर्स्ट, वी कैन से, डिवीजन. दैट डिवीजन इज नोन एज द डिवीजन थैलोफाइटा. के जो प्लांट्स
इसमें जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स के फीचर्स हम देखेंगे कि डिवीजन थैलोफाइटा में किन प्लांट्स को रखा गया. एंड यूजुअली द थैलोफाइट्स दे आर आल्सो नोन एज द एल्गी दे आर नोन एज द एल्गी जो सिंपलेस्ट प्लांट्स है उन सिंपलेस्ट प्लांट्स को रखा गया किस डिवीजन में. दैट डिवीजन इज नोन एज थैलोफाइटा. एंड द फर्स्ट फीचर ऑफ द थैलोफाइट्स या एल्गी इज दैट they are the simplest plants. Simplest plants these are the simplest plants and usually they are aquatic. ये कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं in the water, only in the water. They are present in the water. This is the first feature of the plants which are known as the thallophytes, which are known as algae. Simplest plants which are present in the water. Maximum of the plants they are present in the water and this is the first feature of the plants which are known as algae. अब इनको थैलोफाइटा में क्यों रखा गया है? because their body is thallus like. their body is thallus like. thallus हम किसको कहते हैं? they do not have well differentiated body parts. ये जो well differentiated body parts algae होते हैं या we can say thallophytes होते हैं, उनमें जो plants, उनमें जो body parts like stem, like root, like we can say the other body parts, they are not well differentiated. एक दूसरे से वो बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है and that is why their name has been kept as the thallophytes. That is thallus like, that is there is the absence of the well differentiated body parts. After that, since they are plants, so the next feature is that they are autotrophic. And autotrophic ये क्यों हैं? because they are plants. and autotrophic ये क्यों हैं? that is because of the presence of the chlorophyll. they have the presence of what? the chlorophyll. इनमें जो उनकी जो cells होती हैं they contain the chlorophyll and by the help of chlorophyll they perform the photosynthesis and that is why they are known as autotrophic. after that इसमें या थैलोफाइट्स में बहुत सारे अदर पिगमेंट्स भी होते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे इसी टॉपिक में. फिलहाल ये फीचर्स हम देख लेते हैं. द नेक्स्ट फीचर इज दैट दे कंटेन द व्हाट? सेल्यूलोजिक. सिंस दे आर प्लांट्स दे हैव द सेल्यूलोजिक सेल वॉल्स. उनके ये जो प्लांट्स होते हैं इनका जो सेल वॉल होता है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. दैट इज व्हाई वी राइट हियर thus they have the cellulosic cell wall composed of the cellulose, another feature of the plants. after that the next feature is that they are usually haploid. अभी हमने बात की थी about the gametophytic and sporophytic phase. that is in plants में का या ये जो plants होते हैं they are haploid. that means they are having the half number of chromosomes and haploid in the sense that means they are in usually they are having the gametophytic phase. इनकी जो life cycle में होता है they are also having the alternation of generation. there is also maximum we can see gametophytic phase भी होता है इनमें and sporophytic phase भी होता है इनमें. लेकिन जो we can say dominant इनकी life cycle में जो dominant phase होता है that is gametophytic phase. gametophytic phase means they are haploid in the sense they are having the half number of chromosomes. ऐसे हम एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट है, ये जो प्लांट है ये गेमेटोफाइट है. that means it is having only the n number of chromosomes and this gametophyte produces the we can say male gamete and next this is the next plant, this produces the female gamete by the process that is known as the mitosis. This is the male gamete, this is the female gamete and this male gamete and female gamete they fuse to form a structure that is known as zygote. and ये zygote जो होता है this is the zygote, this contains the 2n number of chromosomes and this is the sporophytic phase. मगर जो zygote होता है immediately zygote अब sporophyte produce नहीं करता है, थोड़े से टाइम के लिए रहता है and after that this zygote जो zygote होता है
ये जो zygote होता है, this zygote that immediately that does not produce the sporophytic phase, that undergoes the division, that is known as the meiosis, huh? And by the help of meiosis it produces the what, it produces the structures, and it produces the spore, we can say structures, and those structures develop into the new plant, that is the gametophyte, हाँ. इसलिए हम बोलते हैं ये जो प्लांट्स होते हैं उनमें स्पोरोफिटिक फेज यूजुअली एब्सेंट होता है, या दैट इज ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन, दैट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ जाइगोट, एंड इन ये जो प्लांट्स होते हैं मैक्सिमम दे आर हैप्लॉइड हैविंग द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, या वी कैन से दे आर द गेमेटोफिटिक इज फिटिक फेज इज डोमिनेंट, हाँ. यूजुअली जो स्पोरोफिटिक फेज होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है इनमें, एंड वो हमने बताया कि कैसे, हाँ. दिस इज द नेक्स्ट फीचर. आफ्टर दैट द नेक्स्ट फीचर ऑफ दिस वेरी प्लांट्स इज दैट, हमने अभी बात की थी, they are having the chlorophyll. Besides the chlorophyll they are having the other pigments, and those pigments, on the basis of those very pigments, in थैलोफाइट्स को सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, या आपको कैन से दैट दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू क्लासेस, वो हम अभी देखेंगे. सो हैविंग ए क्विक रिवीजन फर्स्ट, हमने अभी क्या देखा था, द क्रिप्टोगैमी हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस या 3 डिवीजन, सॉरी, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. उनको हमने पहले हम पढ़ेंगे थैलोफाइट्स, या हमने पढ़ा है थैलोफाइट्स. एंड थैलोफाइट्स दे आर द सिंपलेस्ट प्लांट्स usually living in the water. After that why they are named as thallophytes, because their body is thallus like, absence of the well differentiated body parts we can see. After that the next feature is that they are autotrophic, since they are plants, and autotrophic are because they have the chlorophyll. After that their cells are made up of what, the cellulose, cell walls are made up of the cellulose. After that usually they are haploid, and haploid means they are having the only the gametophytic phase, and sporophytic phase is present, but that is of the short duration. That is why maximum of the plants in their life cycle they include the major phase, that is known as the gametophytic phase. आफ्टर दैट हमने बोला था ये जो प्लांट्स थैलोफाइट्स है, इन थैलोफाइट्स में क्लोरोफिल, बिसाइड्स क्लोरोफिल दे आर हैविंग द other types of pigments, and on the basis of those very pigments we can say thallophytes have been divided into 3 classes. Thallophyta have plants of the thallophyta have been, या और एक फीचर इनका जो होता है, यूजुअली दे रिप्रोड्यूस both by asexual means as well as sexual means. Asexually भी reproduction करते हैं thallophytes, and sexually भी reproduction करते हैं thallophytes. After that the classification of thallophytes algae is that the reserve food material is in the form of reserve food material is in the form of starch. Since they are plants, all the plants they store their food in the form of starch. जो plants होते हैं वो अपना food glucose, जो extra amount of glucose होता है, they convert that into a storage form, and that is known as starch. And since thallophytes are plants, they also store their food material in the form of starch. And the next feature of the thallophytes is that there is the absence of the xylem and phloem, absence of the vascular tissue. ये जो एल्गी होते हैं इनमें xylem and phloem, vascular tissue means xylem and phloem, conducting tissue is that the xylem and phloem is absent in case of the plants which are known as algae. This is the main characteristic feature of the plants belonging to the thallophyta, which are known as algae, that is the absence of the vascular tissue. The classification of thallophytes. Thallophytes have been divided into 3 classes. The first class is known as the Chlorophyaceae. The next class is known as class Phaeophyaceae. The next class is known as the Rhodophyaceae. Rhodophyaceae. These are the
three classes. Three classes. The first one is known as the chlorophyllaceae, phaeophyllaceae and rhodophyllaceae. फर्स्ट हम देखेंगे क्लोरोफाइसी में क्या जो प्लांट्स क्लोरोफाइसी में आते हैं उन क्लोरोफाइसी में क्या फीचर्स हैं. First feature is that they are aquatic, as we know, and most of them they are aquatic. Mostly they live in the fresh water. This is the first feature. Fresh water. They live in the water, but in the fresh waters, not in the marine waters. This is the first feature of the plants which are belonging to the class chlorophyllaceae. And second, उनको chlorophyllaceae में क्यों रखा गया है? Because there is the only the presence of the what? Green pigment, that is the chlorophyll. हाँ? तभी इनको हम कहेंगे, दूसरा नाम इनका रखा गया है ग्रीन एल्गी. Green algae. Green algae, they are green because they contain the photosynthetic pigment, that is chlorophyll, usually chlorophyll A. तभी इनको रखा गया है in the class that is the chlorophyllaceae. And इसमें examples कौन कौन से आते हैं? इसमें examples आते हैं Ulothrix. Ulothrix is the example. Ulothrix. या इसमें आते हैं example Chlamydomonas. Chlamydomonas, this is the example. या इसमें example आती है Cara. These are the various examples. या Ulothrix, Chlamydomonas, Cara, these are the various plants which are under the category of the chlorophyllaceae. And इनके बहुत सारे features और भी हैं. Like अगर हम इनकी बात करेंगे, the reserve food material, that is known as the pyronoid. वो हायर कंसेप्ट है, फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे. आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्लास that is known as the phaeophyllaceae. They are also known as the brown algae. Brown algae, they are brown in color, that is why they are known as brown algae. And the feature of these algae is that their first feature is that they are also aquatic, and aquatic in the sense वो भी पानी में रहते हैं. And most of them they are mostly marine. They do not live in the fresh water. Few of them they live in the fresh water, but maximum of the brown algae they are present in the what? Deep waters, we can say. Yeah, they are in the marine waters. Marine water उसमें रहते हैं. The next feature is that they present a brown pigment that is known as fucoxanthin. Because of the fucoxanthin, they are brown in color. That is the difference between the red algae and brown algae. इसके अलावा इनमें होता है क्लोरोफिल ए या ज़ैंथोफिल्स, इनमें भी प्रेजेंट होते हैं, या कैरोटीन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं. बट द मोस्ट ऑफ द पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द मेजर पिगमेंट इन द phaeophyllaceae, दैट इज fucoxanthin. इसके बाद अगर इनमें रिजर्व फूड मटेरियल की हम बात करेंगे, दैट इज द मैनिटॉल, या द नेक्स्ट दैट इज नोन एज लैमिनारिन. दिस इज द रिजर्व फूड मटेरियल व्हिच इज प्रेजेंट वेयर इन केस ऑफ द ब्राउन एल्गी. इनमें था the pyronoid. Pyronoid, that is the form of the, we can say, polysaccharides. Yes, starch, we can say starch. After that, the examples of the brown algae are laminaria. Laminaria is there. Yeah, we can say the next example of the is that the dictyota. Yeah, Fucus is there, Sargassum is there. These are the various examples of the phaeophyllaceae, brown algae. After that, the rhodophyllaceae, they are also known as the red algae. They are red in color, that is why they are known as the red algae. And first feature of them, they are also aquatic, वे भी पानी में पाए जाते हैं. And they are also marine. Most of them, they are mostly marine. ये marine water में रहते हैं, not in the fresh water. And next feature of them is that they contain a red pigment in them, that is known as phycoerythrin. Because of the phycoerythrin in red algae में present, in red algae में present होता है, तभी इनका color red होता है because of the red pigment that is known as phycoerythrin. And तभी ये इनको differentiate कराता है from the chlorophyllaceae, from the phaeophyllaceae. This is the feature. And after that, the examples of the red algae is the Porphyra या Polysiphonia,
पॉलीसाइफोनिया, या इसमें आते हैं जेलिडियम आता है इसमें. These are the various examples of the red algae. Having a quick recap, the thallophytes have been divided into three classes depending upon the pigment and the various other features. Like the first class is class Chlorophyceae, they are known as the green algae. The next is Phaeophyceae, brown algae, Rhodophyceae, red algae, and Chlorophyceae, we can say green algae. They are green because they contain the major compound pigment that is known as the chlorophyll, and they are freshwater forms. Examples are like this. And Phaeophyceae, they are brown in color, mostly marine, and they are brown in color because of a pigment that is fucoxanthin. Examples are like this. And Rhodophyceae, red algae, mostly marine, and they are red in color because of the pigment that is known as the phycoerythrin. And this much about the class, about the division that is known as the division Thallophyta. Yeah, they are also known as algae. Thanks. Have a nice day.